Hi guys! So we have officially entered into the day 2 of our Dubai trip, and if you haven't watched the episode 1 of Dubai travel series, I have given the link in the description and have also added a card somewhere above, so go and watch it. Today's first destination stop is the Dubai Frame. Dubai Frame opened its doors to the public in January 2018. दुबई फ्रेम अब यूएई का लेटेस्ट कल्चरल लैंडमार्क बन चुका है। दुबई फ्रेम एमिरेट्स के रिच पास्ट को उसके मैग्निफिसेंट प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। अगर आपको दुबई फ्रेम ट्रैवल करना है तो अडल्ट्स के लिए 50 दिरहम्स टिकट है एंड बच्चों के लिए 20 दिरहम। ये सारे ओल्ड दुबई के प्रोजेक्शंस एंड वीडियोस देखने के बाद जब आप लिफ्ट में एंटर करते हो तब लिफ्ट के जस्ट बाहर लिखा हुआ है द वर्ड इम्पॉसिबल इज नोवेयर इन द वोकैबुलरी ऑफ द यूएई, व्हिच इज very true, because when it comes to creating such beautiful structures like Burj Khalifa and Dubai Frame, it clearly says that the word impossible is really nowhere in the vocabulary of the UAE. And now we have finally entered into the lift and are ready to jump onto the 48th floor of the Dubai Frame just in 75 seconds. Look at this beauty, guys. I'm officially in love with Dubai. In der Glas? Outward 50 meters above ground. This place is the 48th floor. Smart glass in the middle, you can walk on it, take photos and videos, but no sitting on the glass. Good news is Dubai Frame is open all days of the week from 9 a.m. to 9 p.m. वैसे अगर आप दुबई फ्रेम विजिट करना चाहते हो तो यू कैन मेक द बुकिंग्स ऑनलाइन एज वेल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दुबई फ्रेम विच आई हैव लिंक्ड डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दुबई फ्रेम के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑल्सो माई मम्मी इज़ गेटिंग स्कैर्ड, यहाँ पे चलने से वो डर रही है, बट इट्स नथिंग, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी को वो ग्लासेस पे से वॉक भी कराया एंड इट वॉज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू आर गोइंग टू दुबई, मेक श्योर यू विजिट दुबई फ्रेम। अब दुबई फ्रेम देखने के बाद हम जा रहे हैं क्रीक पार्क डॉल्फिन शो देखने के लिए, विच इज़ द ओनली डॉल्फिन एंड सील शो इन द मिडल ईस्ट। पता है दुबई की सबसे खास बात मुझे क्या लगती है? आप कहीं पे भी ट्रैवल कर लो दुबई में, आपको हमेशा बुर्ज खलीफा दिखेगा ही। अब क्रीक पार्क में अगर आपको एंटर करना है तो एंट्री फी इज़ डॉल्फिन शो देखने के लिए। दुबई डॉल्फिनेरियम में जाने के लिए आपको टिकट्स खरीदने पड़ेंगे विच विल कॉस्ट यू अराउंड 105 दिरहम्स। You
cannot miss this show. I am telling you, it was a 45 minutes interactive session with the dolphins and it was so very nice. इतना मज़ा आता है जब डॉल्फिन्स डांस करते हैं. डॉल्फिन्स दे जस्ट डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टफ एंड एक्टिविटीज़. इट इज़ रियली अमेजिंग. तो ये चीज़ मिस मत करना अगर आप दुबई विज़िट कर रहे हो तो. और एक चीज़ जो क्रीक पार्क में प्रोवाइड की जाती है दुबई डॉल्फिनेरियम में वो है दैट यू कैन ऑल्सो स्विम विद डॉल्फिन्स. फॉर स्विमिंग सेशन विद डॉल्फिन you'll have to pay 630 dirhams which is equal to 12,600 rupees. मैंने वो पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया बट यू कैन डेफिनेटली स्किप. अभी मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द डे पे. स्पेशली व्हेन यू सी द शेप्स ऑफ द रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रियली लीव्स मी स्पीचलेस. इतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है दुबई में. इधर मारुति गाडी दिखाई नाही आहे आमची. या देशात कुठं दिसत नाही आहे. बाहेरच्या देशात इंडियासोबत मारुती गाडी कुठं थायलंड सारख्या देशात नाही. एकाच दुसरी स्वीट पीस दिली आम्हाला सुद्धा. हेलीकॉप्टर का राउंड कहाँ से? Historical significance of a particular city or a country is very 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 important to be known. एंड इसीलिए अब हम आ गए हैं ओल्ड दुबई म्यूज़ियम में. Housed in the Al Fahidi Fort, this is the oldest existing building in the city and a must visit for a taste of old Dubai. ये बिल्डिंग बनी है 1787 में. 1971 में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्चुअली एज अ कंट्री फॉर्म हुआ तब ये फोर्ट रीओपन हुआ एज दुबई म्यूज़ियम, जहाँ पे दुबई की हिस्ट्री और उसका ओरिजिनल हेरिटेज बहुत ही अच्छे से बताया गया है. 3000 BC जितनी पुरानी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रखी गई है. एक बार हमारा बेटा फोटो काटना बेटा वो शेख बेटा है हमारे वापस. ओके गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लाइक करें. अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि और बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस ऑन द वे है. आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था और ये रहे मेरे कुछ हाइलाइट्स ऑफ द डे.
Yeah, so until we meet for the next time, keep smiling. Bye.